फ्रेंड्स, हाउ आर यू? आई होप यू ऑल आर फाइन. सो आज हम इस वीडियो में देखेंगे कंप्यूटर साइंस क्लास 12th के चैप्टर कंप्यूटर सिस्टम ओवरव्यू. हमने पिछले वीडियो में पढ़ा था कंप्यूटर इट कंसिस्ट ऑफ हार्डवेयर एंड सॉफ्टवेयर. सो हार्डवेयर हम किसे कहते हैं? Computers are the physical components of a computer like CPU, monitor, mouse, keyboard, etc. etc. और सॉफ्टवेयर क्या है? जो हमें आउटपुट देता है. अ ग्रुप ऑफ इंस्ट्रक्शन विच परफॉर्म सर्टेन टास्क. जो हम उसे कुछ टास्क देते हैं या कुछ उसमें इनपुट करते हैं तो वो हमें प्रोसेसिंग करने के बाद हमें जो आउटपुट देता है तो वो हमारा सॉफ्टवेयर हुआ. फिर हमने और पढ़ा था बेसिक कंप्यूटर ऑर्गेनाइजेशन जैसे सीपीयू, देन इसके इनपुट आउटपुट, देन व्हाट आर पिक्सेल्स, ये सब हमने किया था पिछले वीडियो में कवर. देन सीपीयू, फिर सीपीयू के अंदर हमने पढ़ा था एएलयू, सीयू, रजिस्टर्स एंड और प्रोसेसर्स. फिर हमने प्राइमरी मेमोरी किया था, रैम, देन डी रैम, ये सब हमने किया था. तो हम इस वीडियो में आज करेंगे रोम, रीड ओनली मेमोरी. को शॉर्ट में बता दिया जो हमने पिछले वीडियो में किया था. अगर आप वो नहीं देखे होंगे तो पिछले वीडियो में आप जाके देख सकते हैं, फिर ये नेक्स्ट वीडियो कंटिन्यू कीजिएगा आप. लेट्स स्टार्ट विथ रोम, रीड ओनली मेमोरी. दिस इज द परमानेंट मेमोरी विच रीड्स द इंफॉर्मेशन स्टोर्ड इनसाइड इट. It displays the system configuration details during booting of the computer. Is that from starting to the loading of operating system. All these informations are stored in ROM by the manufacturers. सो यहाँ रोम के बारे में कुछ डिटेल्स दिए हैं, वो एक्चुअली क्या करता है. सो अभी हम नेक्स्ट देखते हैं टाइप्स ऑफ रोम. पी रोम, ई प्रोम, देन ई प्रोम. सो पी रोम, प्रोग्रामेबल रोम, रीड ओनली मेमोरी. सो पी रोम, it is the ROM that can be programmed by the PROM programmer to store the record information. Once information stored cannot be altered or changed. सो हमने देखा इसमें हम अगर हम इंफॉर्मेशन डालेंगे तो वो हम उसको चेंज नहीं कर सकते हैं. ई प्रोम, इरेजेबल प्रोम. It is another type of ROM where the stored information can be erased and programmed by special facility. PROM, program facility. The information erased by showing the chip to ultraviolet light. EPROM are of two types, UPROM and EAPROM, where UPROM is ultraviolet PROM and EAPROM means electrically alterable PROM. So अभी हम उसको देखते हैं. What are those? Third is EEPROM, electrically erasable PROM. This type of PROM can be programmed to store information and can be erased by using electrical signals. Information stored in EEPROM can remain for years even if no power supply is there. A backup of information created by RAM in case of power failure. When power supply is restored, the information again restored. यहाँ पे मैंने इसके शॉर्ट्स में लिख दिए हैं EEPROM के बारे में, आप देख सकते हैं. देन हम नेक्स्ट देखते हैं हार्ड डिस्क. हार्ड डिस्क इज कंसिस्ट ऑफ मोर देन वन सर्कुलर डिस्क और प्लेटर्स. दिस डिस्क आर माउंटेड ऑन एन एक्सिस टू फॉर्म डिस्क पैक. ईच डिस्क स्टोर डेटा ऑन वन साइड or upper part and have its own read-write head. The axis is attached to the motor with the help of rotating shaft which help the disk to rotate in circular motion. Each read or write head attached to SS arm which moves in when it is required to read data from disk or write data into the disk. When no action of read-write is there, the SS arm comes out. The disks are divided into tracks and sectors to store data and information. So यहाँ हमने किया हार्ड डिस्क कंप्लीट. सो नेक्स्ट हम देखते हैं मोबाइल. So CPU of mobile is consist of two subprocessors. They are communication processing unit and second application processing unit. So first हम देखते हैं communication processing unit. This unit is responsible of making and receiving phone calls. It has digital signal processor which helps to work the RF transceiver and audio subsystem. Next is Radio Signal Management Unit. It is responsible for connecting SIM
with base station through radio signals. Then next है audio subsystem, converts the voice signal analog to digital and vice versa. The audio system receives the voice input through inbuilt mic and can produce audio output and send it to the sound system. The audio subsystem has two parts, DAC and ADC. DAC digital to analog converter and ADC analog to digital converter. So it converts, DAC converts digital audio output to analog form and ADC it receives audio input and convert to digital form. So यही था DAC and ADC में. तो इस वीडियो में इतना ही हम करते हैं. फिर नेक्स्ट वीडियो में इस चैप्टर को कंटिन्यू करेंगे. फिर इस चैप्टर कंप्लीट होने के बाद हम नेक्स्ट चैप्टर देखेंगे डिबगिंग. और फिर अगर आप बोलेंगे तो हम पहले फिर कंडीशनल चैप्टर कर सकते हैं, इफ़ एल्स कंडीशंस कैसे करते हैं यूज़ हम प्रोग्राम में. सो दैट्स ऑल. थैंक यू. बाय.